Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani here, research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. And we'll just wait for a couple of minutes and then we should be good to go with the live session today. Great, Sudhakar ji is here. Good morning, good afternoon to you, Sudhakar ji. Others who are just here live, जो भी लाइव है यहाँ पे आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ताकि मुझे पता चल जाए आप लाइव हो यहाँ पे. Great, Sachin ji is here as well. Good afternoon, audible. Super. So we just wait for one more minute. Raghbendra ji, hello, good afternoon. So कल हमें एक strong closing मिला निफ्टी में on the expiry day. I think we closed about 25,500 और आज भी एक अच्छा follow up move आते हुए नजर आ रहा है हमें. So क्या लगता है आपको? Did anyone get a chance to go through the rollover report? क्या आपने कल का rollover या SBI Securities का rollover report पढ़ा आप लोग ने? कुछ देखा आप लोग ने कि क्या rollover आया? Any guesses क्या rollover आया होगा कल के इसमें? एनीवे हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में रोल के ऊपर. Yeah, sure, let all people join. Yes, I'll just wait for 15-30 seconds. Bull run in progress. Yes, Nikhil ji. So Nifty has broken out of the range. Sensex भी range breakout दे दिया है यहाँ पे. And बैंक निफ्टी, आई थिंक राममोहन जी आप कल पूछ रहे थे बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर जा सकता है क्या? आई थिंक बैंक निफ्टी इज वेल अबव 57,000. So all in all good, but there is one interesting thing that has happened with respect to bank nifty rollovers as compared to nifty rollovers. I don't know how many of you all would have observed that nifty ka rollovers in line with expectations aaya tha, but there is some surprise with respect to bank nifty rollovers. So we'll kind of discuss that in today's session. Good afternoon, Harish ji. So from where can you get the rollover report? तो आप SBI Securities के वेबसाइट पे जा सकते हो और आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपको एक रोल ओवर एनालिसिस का टैब मिल जाएगा और जैसे ही आप रोल ओवर एनालिसिस का टैब क्लिक करोगे सो यू कैन सी SBI Securities रोल ओवर रिपोर्ट दैट इज टुडेज डेट 27th of June. तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे PDF पे. बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द रोल ओवर, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स अपडेट और मैक्रो इंडिकेटर्स का अपडेट देख लेते हैं सबसे पहले. ग्रेट, आई थिंक वी हैव वन मोर सुधाकर जी ज्वाइनिंग. सुपर. सो अगर हम कल के मार्केट्स कल के सेशन में अगर ग्लोबल मार्केट्स देखें सो डाउ जोन्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ 0.94%. S&P 500 भी 0.88% ऊपर क्लोज हुआ. और अगर हम नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक ऑल्सो क्लोज्ड 0.97% हायर. तो कल यूएस मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव दिन रहा है यहाँ पे. अगर हम डाउ फ्यूचर्स देखें अभी तो डाउ फ्यूचर्स इज अप अराउंड 0.33%. तो आज के दिन में इवन यूएस मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ पॉजिटिव स्टार्ट. अगर हम यूरोप मार्केट्स देखें तो यूरोप मार्केट्स भी पॉजिटिव रहा. अगर डैक्स देखें जर्मनी, सो जर्मनी कल 0.64% ऊपर क्लोज हुआ. लंदन भी 0.19% ऊपर क्लोज हुआ. And France is up 0.78% higher. So Europe markets were also positive. Euro stocks index देखे so that was also positive 0.41% higher. अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें, I think it's bearing Nikkei and our markets. The other markets are witnessing some selling profit booking. So अगर हम देखेंगे Nikkei is up 1.43%. So that is the best performing Asian index. Nifty की बात करें, Nifty is थोड़ा आज flat है Nifty. I think एक gap up के बाद we have got a flat movement until now. So we are at 25,624. It's up 0.29% higher. Sensex is up 0.27% higher. But अगर हम Hang देखेंगे, Hang is down 0.15%. Shanghai is down 0.73.
एंड कॉस्पी इज डाउन 0.77% एज वेल। तो अगर हम देखेंगे पिछले 3 दिन से कॉस्पी इंडेक्स जो कि एक एक बुल रन पे था, तो वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम जून के पूरे महीने में देखें, सो वी नो फॉर अ फैक्ट दैट जून में द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स वाज कॉस्पी अराउंड 13% हायर, इंक्लूडिंग दिस डेटा इज until now. And the worst performing index was your Euro Stocks index that was down around 2%. So Nifty की बात करें, so Nifty around 3.8% ऊपर है, Nasdaq भी 4.4% ऊपर, Nikkei is up around 6%, whereas Dow Jones has relatively underperformed Nasdaq and S&P 500. So Dow Jones is up around 2.56% higher. So all in all, it's looking positive. US markets are in green, Europe markets are in green, and Asian markets are also kind of doing well, including our markets. So nothing major to worry on the global front. I think the two key triggers would be अभी first quarter का result season चालू हो जाएगा जुलाई में. So market will take cues on that. Secondly, US India के बीच में जो trade deal का talks चल रहा है काफी time से, so July 9th उसका deadline है. So we can expect some news regarding the trade deal as well. Considering Israel-Iran के बीच में the tensions have kind of cooled off, which is again a good sign for us. So all in all, there is no geopolitical risk involved at this point of time, but again these news keep coming in here and there. But I think the two major key triggers would be what the Fed is going to do in July. So they had planned for a rate cut. So we have seen that the US government bonds 10-year yields have been going down. So rate cut होगा कि नहीं, क्या inflation under control होगा कि नहीं, that is something that the markets will be keenly looking at. Secondly, the first quarter results will start from July now, I think from 10th or 15th onwards. And thirdly, the US-India trade deal, the trade talks, I think the markets are waiting for, what's in store for us. And अगर हम मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करें, अगर डॉलर इंडेक्स देखें, दैट इज एट 97.19, तो ये और वीक होते जा रहा है डॉलर, इफ वी कंपेयर इट विद द बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज. So as long as the trend is down, it is positive for emerging markets like India. अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10-year yield देखें तो 200 DMA के नीचे क्लोज होके अभी 4.26% चल रहा है. सो अगेन द yields are also moving down. So chances है कि शायद एक रेट कट हो सकता है यूएस मार्केट्स में भी. I think that is one of the reason why the yields have started to go down here. अगर हम इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स इज डाउन 0.8%. इट इज वेरी क्लोज टू इट्स प्रीवियस सपोर्ट विच इज अराउंड 11.9 to 12. तो वहां पे इंडिया विक्स का एक प्रीवियस सपोर्ट भी है. सो वॉलेटिलिटीज यू कैन सी कंसिस्टेंटली. अगर आप देखोगे, हमने स्टार्ट किया था जून का मंथ में एट अराउंड द हाई ऑफ 17.72, और वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट अभी 12.52 पर आ गया. सो वॉलेटिलिटी हैज आल्सो काइंड ऑफ कूल्ड ऑफ, व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द बुल्स. And अगर हम डॉलर बाय रुपी देखें, so dollar we saw dollar was inching towards the 87 mark. Right now it's around 85. So we wanted dollar to go down, and वही हुआ है यहाँ पे. बीच में एक स्केयर मिला था जब क्रूड ऑयल प्राइसेस इजराइल ईरान के टेंशंस की वजह से बढ़ गए थे, जिसकी वजह से डॉलर भी बढ़ गया था. बट नाउ दैट द टेंशंस हैव काइंड ऑफ ईज्ड ऑफ, बोथ द डॉलर इज डाउन रिलेटिव टू रुपी. सो वी आर सीइंग दैट रुपी इज काइंड ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ सिंस द लास्ट 4-5 days और सो. एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी गिरावट नजर आई. यहाँ पे आप देखोगे क्रूड ऑयल इज फ्लैट अराउंड 67.91% हियर. So all in all, it's a positive sign. अगर हम देखेंगे at this point of time, silver is outperforming gold. तो अगर हम silver देखें तो यहाँ पे हमें breakout मिला था $34 per ounce पे. But right now, if you can see, silver is kind of consolidating. So the support for silver will be around 34.5 to $35 per ounce. And if we look at gold, so gold right now is around $3,289 per ounce, and you can see gold is steadily kind of moving down here. एंड अभी वो 50-day EMA के आसपास है, तो हो सकता है वो 50-day EMA से सपोर्ट लेके थोड़ा सा एक रिकवरी देखने को मिल सकती है हमें. बट इफ इट ब्रेक्स 50, देन वी कैन सी गोल्ड गोइंग डाउन अंटिल $3,165 पर आउंस लेवल्स. सो ऑल इन ऑल, अगर हम मैक्रो इंडिकेटर्स देखें, इट इज पॉजिटिव साइन फॉर अस. I think the thing that we've been waiting since a very long time is your FII's activity in the Indian markets. So if we see what FIIs did yesterday, so monthly expiry के दिन cash market में 12,594 crores का buying. I mean, we have not seen this kind of buying by the FI since quite some time now. So काफी heavy buying हुआ है कल.
एंड हम लोग काफी दिन से देख रहे थे कि जब भी वो बाई कर रहे थे वो क्वांटम ऑफ बाइंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना उनका क्वांटम ऑफ सेलिंग था। बट कल कैश मार्केट में एफआईआईज ने 12,000 तकरीबन 12,600 करोड़ के आसपास का बाइंग किया है यहाँ पे। एंड साथ साथ हमें निफ्टी में भी एक रेंज ब्रेकआउट मिला है, सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन फॉर आवर मार्केट्स। एंड अगर हम नेट इंडेक्स फ्यूचर्स भी देखें, हमने देखा था कि काफी टाइम से लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 19 20 22 के आसपास होवर कर रहा था। कल काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी एज एक्सपेक्टेड। वी बीन एक्सपेक्टिंग शॉर्ट कवरिंग टू हैपन, वी वर वेटिंग कि कब होगा, पूरे मे सीरीज में नहीं हुआ, आखिर में net index futures 1,06,000 से 34,967 and long short ratio has jumped to 37.92% now from 23, and Nifty closed about 25,500 at 25,549 yesterday. So good sentiment change definitely हुआ है FIIs की तरफ से, considering that they have purchased around 12,595 crores in cash, and index futures में भी काफी strong short covering हुई है जिसकी वजह से long short ratio 23% से 37% चल गया है। एंड विक्स भी कूल ऑफ हुआ है, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 14-17 लेवल से वी हैव कम टू 12.5। एंड कल भी फॉर द फिफ्थ consecutive day the advance decline ratio was in the favor of advancers, so we had more advancing counters than the declining counters here. So all in all, if I look at the overall chart structure, if I look at what the FIs are doing, if I look at the macro indicators, I think we are set for a good month in July as well. अगर हम निफ्टी की बात करें यहाँ पे, अगर आप देखोगे निफ्टी काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। कल एक हमें फाइनली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला था निफ्टी के डेली चार्ट पे, और आज भी एक फॉलो अप मूव नजर आ रहा है विच इज अराउंड 25,645। सो वी बीन सेइंग दिस सिंस लास्ट कपल ऑफ वीक्स, डोंट बी शॉर्ट इन दिस मार्केट, डोंट कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशंस, एटलीस्ट डोंट बी ऑन द शॉर्ट साइड। आप इंट्राडे में मे बी आप बाय ऑन डिप्स का एक अप्रोच लेके चल सकते हो, बट डोंट बी शॉर्ट इन दिस मार्केट गाइस। आई थिंक द मार्केट हैज टर्न्ड बुलिश एंड हो सकता है वी माइट हैव अ फैंटास्टिक मंथ इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड जुलाई हिस्टोरिकली अगर आप सीजनैलिटी भी देखोगे, जुलाई हिस्टोरिकली हैज बीन गुड फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल, सो वील कम टू दैट. Now talking about the rollovers, so this is the rollover report that we released today morning. तो अगर हम रोल ओवर देखोगे, सो वी नो फॉर अ फैक्ट दैट अगर मिड मे से अगर आप देखेंगे, इंडेक्स हैज बीन ऑसिलेटिंग इन अ टाइट कंसोलिडेशन जोन। तो हमें क्लियरली दिख रहा था कि देयर वाज अ लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शनल बायस अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सो हम देख रहे थे कि काफी टाइम से वो 25,000, 25,100, 25,200, फिर नीचे 24,500, 24,800, काफी टाइम से ये रेंज में घूम रहा था निफ्टी। एंड लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं नजर आया था। एक काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा था, ऑलमोस्ट पूरे मई से लेके पूरे जून तक। दिस इज द ट्रेंड दैट वी सॉ इन निफ्टी। एंड हमने ये भी देखा कि ये जो पिछले एक महीना में काफी सारे गैप अप्स और गैप डाउन्स देखने को भी मिले। इफ यू रिमेंबर, आई हैड आस्क्ड यू ऑल कि ऐसे मार्केट्स में कैरी फॉरवर्ड मत करना अपना पोजीशन, बिकॉज पता नहीं कि क्या हो सकता है। सो क्या क्या कंसर्न है, एक तो ट्रेड वॉर का कंसर्न था, मिडल ईस्ट में जो एस्केलेशन हो रहा है इजराइल ईरान के बीच में, उसका एक टेंशन था। फिर हमने देखा कि एफआईआईस की तरफ से फ्लोज एकदम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था यहाँ पे। सो बट डिस्पाइट द ये जो वॉलेटाइल स्टार्ट है, अगर आप देखोगे इंट्राडे मोमेंटम भी काफी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था, काफी वीक था यहाँ पे। तो थोड़ा सा ट्रेडर्स की तरफ से एक हेजिटेंसी भी दिख रहा था टू कमिट पोजीशंस ऑन ईदर ऑन द अपसाइड और द डाउनसाइड योर। बट फाइनली एक्सपायरी के दिन हमें 25,500 के ऊपर क्लोजिंग मिला यहाँ पे। एंड पूरे अगर हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी देखें यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 2.69% का एक हेल्दी गेन डिलीवर किया था यहाँ पे निफ्टी ने। अगर हम रोल ओवर की बात करें यहाँ पे, सो दिस ब्रेकआउट नॉट ओनली सिग्नल्स अ पोटेंशियल शिफ्ट इन शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, बट ये जुलाई सीरीज के लिए भी एक पॉजिटिव टोन सेट किया है कल का क्लोजिंग के बाद। अगर हम रोल ओवर की बात करें, सो द रोल ओवर फॉर निफ्टी फ्यूचर्स हैज कम टू 79.53% इन जून गाइस। सो जून का रोल ओवर हैज कम टू 79.53, और जो मई का रोल ओवर था वो 79.10 था। तो पिछले महीने के रोल ओवर से ज्यादा रोल ओवर आया। और अगर हम 3 मंथ का एवरेज देखें, वो है 79.24। सो वी हैव सीन अ स्लाइटली higher rollover compared to the last month and its 3 months average year. So which means that thoda continued participation hai, and the traders have carry forwarded their positions to the next series as well.
सो अगेन ये काफी एक पॉजिटिव है. हायर रोल ओवर आना एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट भी आना. और अगर आप देखोगे एफआईआईस की मैं बात करूं तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 37.92 तक सर्ज हो गया. दैट मीन शॉर्ट पोजीशंस कवर हुए. अभी ये देखना पड़ेगा कि एफआईआईस अपना लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाते हैं कि नहीं, वेदर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो गोज अबव 50. If that happens, then high chances are that we might see a good uptrend in the coming days. और मैं आपको सीजनैलिटी का बात कर रहा था कि जुलाई हिस्टोरिकली कैसा रहा है निफ्टी के लिए. तो अगर हम सीजनैलिटी देखेंगे, हमने पिछले 18 साल का डेटा यहाँ पे स्टडी किया है. यहाँ पे हमने देखा है कि जुलाई 18 में से 14 बार पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है जुलाई के महीने में. और वो जो 14 टाइम जो पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है उसमें एवरेज गेन वाज अराउंड 4.6%. और 4 बार 18 में से 4 बार नेगेटिव क्लोजिंग दिया है वेयर द एवरेज लॉस वाज अराउंड 2.37% ईयर. तो अगर आप देखोगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी एंडिंग अप ऑन अ पॉजिटिव साइड इज मच हायर इन द मंथ ऑफ जुलाई. एंड कंसिडरिंग दैट वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट, हाई चांसेस आर दैट हमें जुलाई एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे. सो अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अभी निफ्टी चल रहा है 25,600. सो इफ आई लुक एट द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी, तो अगर मैं वीकली की बात करूं यहाँ पे, so if I look at the total OI, so I can clearly see for a fact that 25,500 mein there is maximum put OI. So I feel this 25,500 will act as a strong support now. So we are well above the 25,500 mark. और 25,600 में भी अगर मैं टोटल ओआई देखूं, सो पुट राइटिंग ज्यादा एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग. सो पुट राइटर्स or the bulls are creating support at 25,600 as well. But if I have to take a slightly far away level, I would say 25,500 will act as a strong support. And on the higher side, I feel Nifty is set to move towards the 26,000 mark. But before going to 26,000, it can face some resistance at 25,700, 25,800, and 26,000. So 26,000 is where the maximum OI is placed. Looking at the OI structure, 25,500 to act as a support, whereas 26,000 to act as resistance. अगर मैं आज की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखूं, सो 25,600 में पुट राइटर्स अपना इंट्राडे में पोजीशंस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे. बट अगर मैं 25,700, 25,800, 26,000 देखूं, तो वहाँ पे कॉल राइटर्स का प्रेजेंस अभी भी काफी ज्यादा है. तो और निफ्टी और ऊपर जाता है करंट लेवल से, हाई चांसेस आर दैट 25,500 के ऊपर सस्टेन करेगा निफ्टी एज लॉन्ग एज इट कीप्स गोइंग अप. ये जो कॉल राइटर्स बैठे यहाँ पे, इवन दे विल स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट पोजीशंस एंड पुट राइटर्स विल स्टार्ट एंटरिंग. So when put writers start to enter and call writers start to cover, that is the time when we can see a good swift momentum picking up in Nifty. So if to give you a broad levels for Nifty, 25,500 and 26,000 on the upside, but it faces some strong resistance at 25,700 and 25,800 as well. Before coming to Bank Nifty, let's talk about Sensex. अगर हम Sensex की बात करें, pretty much similar story in Sensex as well. तो सेंसेक्स में भी हमें कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिला था 1.21% का. इवन सेंसेक्स हैज ब्रोकन आउट ऑफ द रेंज. अगर हम डेली चार्ट देखें, इट इज ट्रेडिंग वेल अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इज ट्रेडिंग अबव इट्स 20-day EMA as well. If you can see RSI is also above the 60 mark, which is again a positive sign. ब्रेकआउट के साथ साथ जब RSI भी 60 के ऊपर है. ADX is kind of flat, but I can see ADX has slightly tilted up. It's towards the 19 mark. As and when the ADX also starts going up, we can see some momentum coming in Sensex as well. So फिलहाल के लिए Sensex अभी 84,000 पे है. So I feel this level of 83,000 will act as a very strong support for Sensex. So जैसे 25,500 हमने निफ्टी के लिए देखा था, वैसे 83,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है. And on the higher side, I feel Sensex can go towards 85,000 mark on the higher side. तो हो सकता है we might get some dips, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है हमें. बट द ओवरऑल ट्रेंड इज इंटैक्ट गाइस. आई थिंक दिस ब्रेकआउट, आई फील अगर यहाँ से एक फॉलो अप मूव आता है हमें, and if FIIs also keep covering shorts at this point, and if we see more influx of new fresh long positions getting added from these levels, high chances, and considering the seasonality for the month of July, काफी high chances है कि हमें निफ्टी एक पॉजिटिव इसमें ही नजर आए. डोंट, अगेन आई वुड से द सेम थिंग, डोंट बी ऑन द शॉर्ट साइड.
भले ही छोटा सा आपको अगर पुल बैक आता है ऑन दी downside, don't try to chase that. गिरने के बाद find where the next support is and look for some reversals coming in from that support here, or look for strong breakouts coming in on an intraday basis. I think that should ideally be your strategy going forward, because the overall trend is up, and remember, in technicals your trend is your friend, so respect what the trend is and don't be on the short side and chase the down move. Up move ko hi chase karna and be on the ideally be on the long side in the markets. I think that is what I would say. So 83,000 to act as a support, and I feel on the upside 85,000 will act as a resistance here. Now if I look at bank nifty, मैं जैसे बोला था ना, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रोल ओवर आया है, विल कम टू दैट. बैंक निफ्टी में अगर देखे कल वो 57,050 57,100 का जो जोन था, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था. But eventually, we could see that Bank Nifty took out 57,000 level as well, 57,050. Right now, it is at 57,385, though it is going up. But I'll show you what the rollover suggests for Bank Nifty here. So अगर हम देखेंगे Bank Nifty, जैसे Nifty एक 700 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा था, वैसे ही Bank Nifty एक 1800 पॉइंट के रेंज में ट्रेड किया था जून सीरीज में. But again, we saw it gaining momentum on the expiry day. It closed above 57,200. Ideally, 57,050, 57,100 was a very strong resistance. Nifty closed with a gain of 2.69%. Bank Nifty closed with a gain of 2.48%. But if we look at the rollovers for Bank Nifty ka rollover in fact declined. It has come to 75.75% in June series. अगर हम मे का रोल ओवर देखेंगे, दैट वाज 79.29. सो दैट इज नॉट अ मार्जिनल डिक्लाइन, दैट इज थोड़ा सा यहाँ पे हेजिटेंसी नजर आ रहा था. यहाँ पे मे का रोल ओवर वाज 79.29, 3 months एवरेज वाज 76.7, whereas June का roll over came in at 75.75. Despite the breakout, despite Bank Nifty breaking out of the range, despite Bank Nifty finding support from its heavyweights, that is your HDFC Bank and ICICI Bank, the rollover has declined to 75. This probably indicates कि थोड़ा सा carry forward हुआ है, no doubt. But I think people have I think the traders have look to book some positions, and थोड़ा सा hesitancy दिख रहा था to carry forward the position to the July series. भले ही निफ्टी में higher rollover आया है, breakout आया, so it supports कि जुलाई का trend भी एक strong रह सकता है. बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है रोल ओवर कंपेयर टू द मेज रोल ओवर एंड इट्स 3 months एवरेज एज वेल. सो कैरी फॉरवर्ड हुए, बट आई थिंक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है बैंकिंग स्टॉक्स में, और इतना स्ट्रॉन्ग रोल ओवर नहीं आया जितना निफ्टी का था. बट हैविंग सेड दैट, if we look at the seasonality for Bank Nifty, even for Bank Nifty, July has been very positive. So अगर हम पिछले 18 साल की डेटा देखें, out of last 18 years, it closed positively 13 times, and the average gain was around 4.5%. Whereas 18 में से 5 बार वो negative close दिया with an average loss of 3.58%. So historically, the month of July has been good for both Nifty and Bank Nifty. So these were the the rollover for Bank Nifty and Nifty. अगर मैं Bank Nifty की levels की बात करूँ यहाँ पे, so Bank Nifty we have monthly expiry, we don't have the weekly expiry. तो अगर मैं total OI देखो, I feel now 57,000 will act as a very strong support for Bank Nifty. So right now we are at 57,300, 57,320 mark. So 57,000 एक strong support हो सकता है. अगर आज की intraday activity देखें तो 57,000 में strong put writing भी हुआ है. So chances are that Bank Nifty might stay above 57,000. The only mood dampener I would say is slightly lower rollover than previous months and its 3 months average. So that is something. So we'll have to wait and watch and to see कि एक fresh long positions build हो रहा है यहाँ पे, or is the momentum fizzling out in Bank Nifty. So that is something that we need to keep a track on. And on the upside for now, I feel 57,500 will act as a resistance. Though I won't say significant difference है 57,500 में, but 57,500 में there is call writing. But अगर हम आज की डेटा देखें तो 57,500 में अभी भी there is more put writing than the call writing here. So हो सकता है Bank Nifty might go past 57,500 mark as well, considering the OI data.
But once it takes out 57,500, then I think it can go towards the 58,000 levels. 58,000 में एक strong resistance है. But the immediate level to watch out on the upside will be 57,500. There are call writers, but put writers are fighting the call writers there. And at this point, put writers are leading the call writers. So looks like 57,500 के ऊपर जा सकता है. Whether it will sustain, that is something that we need to uh, see in the coming days. Now, if you see, the price has made a higher high in Bank Nifty, but if I look at RSI, so RSI is yet to cross its previous high. The previous high for RSI was around 69.70, and right now it is at 67. So I have not seen RSI going above the previous high here. So obviously, अगर price थोड़ा ऊपर जाता है, so this RSI will also go up. But looking just purely, if I have to judge based on the rollover data, I would go with the price though. So right now the price has given a breakout. So if it follows up, then chances are that even Bank Nifty can outperform in the coming days. Now talking about the key sectors, so based on rollover, कौन से sectors में सबसे strong rollover हुए? So if we see private banks, financial services, auto, healthcare, oil and gas, capital markets, infrastructure, metal, realty, we have seen all these sectors. I think we have covered these sectors, in our mid-market session since quite some time. So we have seen capital market doing well. We have seen auto stocks doing well. Recently, we saw infra stocks have started to do well. Then realty stocks, there was a period where realty stocks were doing well as well. But there is one sector that has shown slightly lower rollover. So that is FMCG. So FMCG is one sector that is underperforming the Nifty index as well. And the rollover is also not very strong in FMCG. So possibly avoid FMCG sector for now for going long. But FMCG sector में थोड़ा सा pressure है. So all the stocks that are part of FMCG space, I think अभी वो underperformance चल रहा है यहाँ पे. Now, based on the rollover, so जो भी हमने discuss किया था, you can find the Nifty's view here. You can find the Bank Nifty's view. So you can see which were the stocks that were top gainers and top losers of the June series. And then you can see which stocks saw strong rollover, which stocks saw weak rollover. So you can see that detail here as well. So we covered this rollover यहाँ पे. And now let's come to the stocks that can do well. कौन से sectors ऐसे हैं based on the rollover data, based on the price action, and based on the ratio chart outperformance and underperformance. So we are looking at rollover data, we are looking at ratio chart, outperform कर रहा है कि नहीं, and we are going to see based on that and based on price action as well, which are the sectors that can do well and which are the stocks that are looking good for the probably for the next 2 to 3 weeks from here on. So in the morning trade अगर हम देखेंगे metal sector again strong rollover आया था and we can see metal sector पिछले 4-5 दिनों से एक strong outperformance दिखा रहा है यहाँ पे. Now under the metal space, if I have to pick out one stock, I would say it will be Hind Copper. अगर मैं Hind Copper की बात करूँ यहाँ पे, so we could see this is where we got a downward sloping trend line breakout. Then the price went up. फिर the price started consolidating in this 243-265 range. Then it took support from its 20-day EMA here, and then it started to go up. और कल हमें breakout भी मिला था. ब्रेकआउट के साथ साथ अगर आप देखोगे वॉल्यूम में भी एक अच्छा स्पाइक मिला था हमें. द आरएसआई मूव्ड अबाउट 60, एडीएक्स वाज वेल अबाउट द 25 मार्क, एंड राइट नाउ इट इज समवेयर एट अराउंड 27 लेवल्स. नाउ इफ वी लुक एट द रोल ओवर फॉर हिंद कॉपर, so the 3 months average rollover was 94.77 and we got the rollover at 95.38. So higher rollover भी हुआ हिंद कॉपर में. एंड अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखें यहाँ पे, so Hind Copper ka price chart, the price action is also looking very positive. So chances are that we can see some outperformance in Hindustan Copper. So with around 250 levels to act as a support, ये जो 20-day aim है वहाँ पे आप एक support लेके इसको आप देख सकते हो. The other sector that is kind of doing well is your commodity space. अगर हम commodity by Nifty का ratio chart देखें यहाँ पे, so it is on the ratio chart is on the verge of giving a breakout here. Now, if I have to talk about few stocks from the commodity space, one will be Hindustan Petro. अगर हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखें, so ये जो एक strong resistance था हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए, so around 420 का zone. फाइनली आज हमें एक ब्रेकआउट नजर आया हिंदुस्तान पेट्रोलियम में. आरएसआई भी 60 के ऊपर गया है. द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस
यहाँ पे 200 डे से सपोर्ट लेके द प्राइस हैज गॉन अप. ADX is also slightly moving on the higher side. And if we look at what is the rollover for Hindustan Petro, so the 3 months average was around 92.25%, whereas the rollover has come at 95.84. So very strong rollover in Hindustan Petro. And the chart structure is also looking good. So maybe around 397, 398 can act as a very strong support for Hindustan Petroleum. और हो सकता है इसका जो प्रीवियस हाई है 456, 460 लेवल्स टेस्ट कर सकता है. The other stock from the commodity space that is doing well since last couple of sessions is Ambuja Cements. अगर हम अंबुजा सीमेंट्स देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है. आरएसआई अभी 60 के ऊपर चला गया है. It is trading above its key moving averages. The ADX is also inching. It's towards the 16 mark now. The ADX is also pointing upwards. And if we look at Ambuja Cements, if we look at what is the rollover, so the 3 months average was 94.61. So we got the rollover at 95.22 for Ambuja Cements. And इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे. So I feel if it around 555, 550 can act as a strong support for Ambuja Cement. और अगर यहाँ से ऊपर जाता है, I think minimum it can go until 585 and post that एक strong out performance हमें नजर आ सकता है Ambuja Cements में भी. The other stock is Reliance. I think we've been seeing Reliance since the last couple of trading sessions. We were waiting for this breakout 1465, 1468. So we got a breakout on the 26th of June, and today again एक strong follow-up move हमें दिखाई दे रहा है. If you look at the key moving averages, the price is trading above key moving averages. See, the ADX has just touched the 25 mark and it is trading above 25. RSI is also above 60 and we have got a nice breakout here as well. And if we look at the rollover for Reliance, so the 3 months average rollover was 91.87%. We've got the rollover at 92.37. So look at the positives at Reliance. So we have got a resistance breakout in Reliance. Reliance being a heavyweight stock for Nifty. The RSI has gone above 60. It is trading above its 20, 50, 100-day and 200-day EMA. The ADX has also gone about 25. And we have got more than higher rollovers. 3 months average rollover se zyada bhi hai. So you can see Reliance is one stock that can do well, in the coming sessions. Immediate resistance would be around 1535. Once it takes out 1535, chances are that it can go towards the 1600, 1605 levels here. So keep a track on Reliance. All the momentum indicators and oscillators are indicating good strength. The price action is very positive. And the rollover has also come positive in favor of Reliance Industries. The other sector again that we have been discussing since last 2 days. Yesterday we had an in-depth discussion on this sector as well, which is your infra space. Again, infra space also saw strong rollovers for this month. So we've gotten an ascending triangle like breakout in infra by Nifty ratio chart. And you can see infra stocks are doing well. Yesterday we gave a breakout. Today again there is a follow-up move in all these counters. So if I have to pick out stocks from the infra space, the first stock that I would look at is Indigo. So अगर हम Indigo की बात करें यहाँ पे, so Indigo has given, so there is one resistance here, there is one resistance here as well. So Indigo has broken out of this horizontal zone of 5,678 to 5,722. Again, it is trading above its key moving averages. The RSI is above 60. ADX is also pointing upwards. And if I have to see the rollover, so I wouldn't say ekdam higher than 3 months averages. So if you see 3 months average is 95.63, whereas the rollover has come at 95.32. So it's somewhere there. It's a nahi ki rollover ekdam kam hua hai jaise humne Bank Nifty mein dekhne ko mila tha. And if you see the 3 months rollover cost was 0.64, whereas this time the rollover cost has come at 0.74. So there have been some positions that have been carry forwarded at a slightly higher premium as well. So Indigo has broken out. So high chances are that we can see outperformance in Indigo. So around 5,550, 5,560 will act as a very strong support for Indigo here. The other stock that is doing well from the infra space is Ashok Leyland. अगर हम Ashok Leyland की बात करें, यहाँ पे breakout आया था, retest आया था, 50-day EMA से support लेके एक strong bounce हमें देखने को मिला है. Again, the ADX is not about 25. The ADX is kind of flat. RSI is above 60. It is trading above its key moving averages.
And if we look at the rollover, the 3 months average rollover was 89.58. The rollover has come to 93.52%. So काफी strong rollover आया अशोक लीलैंड में. और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे वो बढ़ती हुई नजर आ रही है. So keep an eye on Ashok Leland as well. So right now it is at 250, around 235 will act as a very strong support for Ashok Leland. The other stock, Mahanagar Gas. So we have seen Mahanagar Gas काफी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में था और काफी टाइम से एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था. So all the gas stocks are doing well. So if you look at Mahanagar Gas, Indraprastha Gas, Adani Total Gas, all these gas stocks are seeing some kind of momentum today. But if I, look at Mahanagar Gas here, so Mahanagar Gas again, RSI has gone above 60. It has given a major, this range breakout today on the daily scale. It is up around 4.5%. The ADX is also, moving on the higher side. So, we can see some kind of outperformance coming in Mahanagar Gas as well. So we can just see what is the rollover. Let's say if rollover यहाँ पे हमें support किया है कि नहीं. So I will look at MGL. So MGL, if we see the 3 months average rollover was 89%, but the rollover has come to 84. So I won't say a very strong rollover. In fact, ये महीने का जो rollover था वो थोड़ा सा decline हुआ है यहाँ पे. From 89 it has come to 84%. But nevertheless on the price chart, Mahanagar Gas is doing well. And the last stock that I want to discuss is HDFC AMC, which is part of the capital market space. So HDFC AMC again, a 20-day EMA को respect कर रहा था. Here we got a gap down, but then it went up and it held on to its 20-day EMA. It is trading well above its 20-day EMA. The ADX is kind of contracting here. That is a slight thing to look at. But I think RSI has gone above the 60 mark. And if I see what is the rollover for HDFC AMC, 3 months average was 92.92, whereas the rollover has come at 94.18. So if we get a follow-up move, chances are that it can go towards the 5,270, 5,300 mark, while the zone of 4,950, 4,960 will act as a support for HDFC AMC. So that was all about the rollover. So we discussed Nifty, Bank Nifty rollover. We discussed seasonality for the month of July. We looked at the key important levels. We looked at the global markets. We looked at the FII positioning. We saw the sectors. So how did I select the sectors and stocks? You look at the ratio charts. Look for sectors that are showing outperformance. Then look for sectors that saw good rollovers. Then from that you zero down on the stocks here. So that was all about today's mid-market session, guys. So now let's start up with the question and answer session. During market hours, can we see? No, we can't see during market hours, Sudhakarji. We get the FI data only in the evening at around 7:30 when the above copy is uploaded. Sir, SBI Securities का वेबसाइट पर ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स क्यों नहीं है ऑप्शन चेन? वेबसाइट पर नहीं है, बट आपको मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा केशर जी. बट आई हैव कम्युनिकेटेड योर फीडबैक टू माय टीम. होपफुली वी माइट गेट मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ कब तक आएगा, बट आई हैव डेफिनेटली पास्ड ऑन योर मैसेज टू माय टीम हियर. वेयर कैन वी सी रोल ओवर डेटा? सो सुधाकर जी, आप SBI Securities वेबसाइट पे जा सकते हो. यू कैन जस्ट गो टू sbisecurities.in. Once you go to sbisecurities.in, you will see the research tab here at the top. Under research, you will have fundamental research, technical derivatives, and mutual funds research. So if you can go to technical derivatives here, under technical derivatives, you will see a lot of reports that we release on a daily basis: daily market mirror, daily derivative report, weekly report, sectoral report. So here you will find rollover analysis. You need to click on rollover. And here you will see SBI Securities rollover report. So हर महीने का rollover report यहाँ पे मिल जाएगा. You click on view PDF and you will see the rollover report for this month. Shankar ji is saying, really appreciate SBI Securities for presenting the facts and data on rollovers. It's a great initiative. Thank you so much, Shankar ji. So every month, after we have the monthly expiry, the next mid-market session is all about rollovers. So we will do that going forward regularly. Pallavi ma'am is asking, could you please show how to plot ADX on charts? Yeah, sure. So if I see the charts, ये देखो, मैं आप indicators में जा सकते हो. यहाँ पे you can type ADX and DI, or you can just type ADX. आप जैसे टाइप करोगे यहाँ पे you can see ADX and DI का एक community के अंदर ADX and DI मिल जाएगा आपको. So you can click on that.
And when you click on ADX and DI, यहाँ पे आप settings में जा सकते हो. So you can see DI plus is green, DI minus is red, ADX आप इसको black color or any color that you feel like, and you can keep this level at 25, or you can give it a different color, maybe red, and you can just click on OK. So here you can see there is this ADX line that is plotted on the chart here. Here, Pallavi ma'am, 1 minute analysis. See, IndusInd Bank, Harish ji, I would say avoid, because uh, I think it has gone through a lot of corporate governance issues over the last few months. But again, if you look at the price chart, there is nothing much is happening. We've seen some bouts of buying that has happened at the lower levels here. But if I look at the overall trend, it is still down. I mean, it is still trading below its 100-day. It's still trading below its 200-day EMA here. So unless and until it doesn't go above 1,000, and unless and until nothing positive comes out of IndusInd Bank, I would say it's better to avoid IndusInd Bank, Harish ji. I think there are much more better counters available in the banking space. HDFC, for example, is at the high. ICICI Bank is doing well. Then even Axis Bank is doing well as well. So if you look at Kotak, even Kotak Mahindra Bank is doing well. I would say better to avoid IndusInd Bank, in the banking space. Tarun ji is asking for Federal Bank. See, Federal Bank की मैं बात करूं तो जब ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है 214 का, और उसके अगर हम ऊपर देखेंगे तो 217 का भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. तो जब तक ये 214 217 के ऊपर हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है तरुण जी, आई थिंक अवॉइड फेडरल बैंक. वंस वी गेट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, that is when we can look to enter into this stock here. What about the pharma sector rollover data for the July, since the results are there? So yeah, you can see pharma sector as well. So let me show you. So if you go to the report here, so हमने क्या किया, हर एक sectors को group wise हमने rollover किया हुआ है यहाँ पे. So index का अलग, automobiles का अलग, you can see banking stocks का अलग है यहाँ पे. So फेडरल बैंक अगर आप देखोगे रोलोवर तो ज्यादा आया, 88.85 आया यहाँ पे. बट आई वुड से जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है तरुण जी, तब तक आप इसको वेट कर लेना फेडरल बैंक में. So this is for financials, capital goods, FMCG, oil and gas, metal. So you can see this is pharma sectors ka rollover is your. So you can see Oro Pharma has seen good rollovers, pharma space mein. Cipla again from 93 it has shown 96.63. Cipla has shown good rollover. Divi's Lab again, we saw Divi's Lab had given a breakout long time back, almost 1 month. I think if you remember, we had identified that breakout when it was actually breaking out. So 94 and 97.44, that is, we have seen good rollovers in Divi's Lab as well. And in Zydus Life also 93 and 96. So these are some stocks, Oro Pharma, Cipla, Divi's Lab and Zydus Life. So these are the 4 stocks जिसपे rollover काफी ज्यादा आया है हमें pharma space में. Can you add MGL? Yeah, you can add MGL at this level. Maybe you can keep a stop loss. I mean, you can definitely take a chance. Around 1375 के आसपास आप एक support, एक stop लगा सकते हो आप. So DMart rollover increased and rollover caused price also up 3%. So ये conclude कर सकते हैं कि DMart will not break 4,300 and pre and be high है 35 up then underlying. Okay, let me see DMart again. See DMart भले ही the rollover data is positive, but maybe अगर आपको इसका एक tight support ही रखना है तो आप around 3,980 4,000 आप रख सकते हो. या मे बी अगर और भी टाइट रखना है आपको, ये जो 20-day EM है अराउंड 4,180 के आसपास. सो एज लॉन्ग एज इट होल्ड्स अबव दिस प्रीवियस हाई 4,200 4,225, I think it can be positive, but it's a matter of getting that buying in DMart here. DMart में 4,355 के ऊपर हमें एक strong buying चाहिए. I think once that happens तो हो सकता है थोड़ा सा आए, बट अभी फिलहाल के लिए मोमेंटम नहीं है यहाँ पे. So I think I would say इसके लिए आप DMart avoid करना. Murthy ji is asking for KVB. Which stock is KVB, Murthy ji? Acha, Karur Vysya Bank. Okay. Let me look at Karur Vysya Bank. Oh, very good. I mean, if I look at Karur Vysya here, it has given a nice breakout. एक strong narrow range से भी आज एक breakout दिखाया दिया है यहाँ पे. ADX is well above the 40 mark. My only worry is the ADX has moved up a lot. I think if Dinesh ji is here in the session, he would not would want to
get into Karur Vysya Bank now, but ADX is around 39, RSI is towards above 70 here. But if you want to take a chance in Karur Vysya Bank, maybe around 241 can act as a support. And if it goes up from the current levels, it can be positive. But the chart structure is very good in KVB. Tapanji is asking, sir, your view on Grindwell. Okay, let me look at Grindwell Norton. अवॉइड करना तपन जी, ये देखो डाउन ट्रेंड में है, की मूविंग एवरेजेस के नीचे है, आरएसआई भी नीचे की तरफ है, एडीएक्स भी नीचे की तरफ है, तो बिल्कुल मोमेंटम नहीं है ग्रिंडवेल में. मे बी अराउंड 1525 के आसपास आप एक सपोर्ट रख सकते हो, या 1600 के आसपास आप सपोर्ट रखना. अगर 1600 के नीचे जाता है, इट्स बेटर टू एग्जिट. Clear. Sudhakar ji saying excellent presentation by SBI Securities on rollover data. Thank you so much, Sudhakar ji. Sachin ji, sir, Oro Pharma rollover has increased, but the price is down 4%. See, pharma space का अगर मैं ratio chart भी देखूं, सबसे पहले तो हम ratio chart देखते हैं. So when I see pharma by Nifty, I can clearly see pharma is underperforming Nifty here. तो pharma भले rollover अच्छा आया है सचिन जी, but pharma एक underperformance दिखा रहा है यहाँ पे as we compare it to Nifty. And similarly अगर हम Oro Pharma की बात करें यहाँ पे, तो Oro Pharma में भी आप देखोगे कि मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो इसमें बिल्कुल मोमेंटम नहीं. नाउ कंपेयर फार्मा विद इंफ्रा. इंफ्रा में कैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई दिया है, बट फार्मा एफएमसीजी, यू नो, इवन इफ यू लुक एट एफएमसीजी बाय निफ्टी, यू कैन सी एफएमसीजी इज आल्सो अंडर परफॉर्मिंग, फार्मा इज आल्सो अंडर परफॉर्मिंग योर. सो यू नो, स्टे अवे फ्रॉम दी सेक्टर्स दैट आर शोइंग अंडर परफॉर्मेंस. और मे बी अगर आपको वो सेक्टर्स पे जाना है, मे बी यू कैन लुक फॉर सम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज in such sectors rather than buy opportunities here. Sudhakar ji is saying, do you agree that as long as Mr. Powell is there, interest rates change may not be there? Yeah, I know for a fact that both Jerome Powell and President Trump are kind of, going at each other. President Trump thinks, inflation is under control and he wants Fed to cut rates. But Fed says no, there is uncertainty around the trade talks. The inflation might go up. GDP forecast भी उन्होंने कम किया था, inflation forecast बढ़ा दिया था. So they are playing a wait and watch game. But I don't know. I mean, I can't comment on these specifics. But considering that federal governor has said maybe July, May, if the inflation is under control, they might go for a rate cut. And for this year, they have projected 2 rate cuts here. So that is something that we'll have to wait and watch. The market is expecting a rate cut considering the recent comments. But again, it depends on the inflation data that comes out from the US. I think the Federal Reserve might just act on that. Metal is good. So metal में Hind Copper is looking good. अमित जी, VDL में आज profit booking नजर आया था हमें. But अगर आपको VDL लेना है तो I think it's better you look for VDL above 472. So 472 के ऊपर अगर जाते हैं, then it can be positive. सर, रोलओवर डेटा में डाउट था इसलिए क्वेश्चन किया. या दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. सो फार्मा में सी रोलओवर डेटा सिर्फ उसको आइसोलेशन में आप मत देखना सचिन जी. लुक एट रोलओवर डेटा. अगर फार्मा सेक्टर में अभी रोलओवर अच्छा है, बट उसमें सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सो ऐसे यू कैन अवॉइड. सो अगर रोल ओवर भी पॉजिटिव है, सेक्टर में भी आउट परफॉर्मेंस है, प्राइस में भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग अबाउट इट्स की मूविंग एवरेजेस. जैसे हमने सारे जो सेक्टर्स और स्टॉक्स डिस्कस किए, मे बी यू कैन लुक फॉर दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स और दोस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो यू एंडिंग अप ऑन द राइट साइड would be much higher than you ending up on the wrong side for such sectors. Dollar index is falling, gold is also falling. Yeah, so gold is falling, dollar index is falling, bonds are also falling. So only the equity markets are doing well at this point. And it's good that dollar is depreciating against the rupee, because when dollar depreciates, that is when we have a lot of FIIs flows coming in Indian markets. But अगर dollar strengthen होता है, so FIIs outflows देखने को मिलता है Indian market से. So if the dollar is strengthening, then they are better off investing in other markets where the dollar gains. But where rupee gains, it makes sense to invest in Indian markets here. When to buy, support or resistance, for which one are you asking, Tarun ji? हमने मैं इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल वेबिनार भी किया हो, so you can go and check that on SBI Securities YouTube channel as well, guys. IT should do well. Yeah, but let's see. I think IT is the one that starts off the result season.
So we'll get the we'll get the IT stocks will lead the pack. So we'll have to see how the results come out. I think that will, so IT stocks will take cues from that, guys. Okay, so that's all from my end, guys. I hope today's session was informative on rollovers. So that brings us to the end of this week's mid-market session. And happy weekend, guys. Stay with your families. Take care. And I'll see you on Monday with the new mid-market session, guys. So bye, guys. Take care. Happy weekend. And I'll see you all soon. Bye, guys, and take care.